has been having trouble joining in, just send a message in the group and I will help them join again. So the recording has started. Let us begin our lecture today. So the antibiotic sensitivity assay are designed for high-speed testing of multiple antibiotics. In old days, you do not have the access of using a lot of antibiotics in the small format um, in order to get hold of quick results. The doctors require this information because there are multiple types of pathogens. You know, there are gram-positive and gram-negative pathogens. There are some cocci and bacilli. So for different types of pathogens, there are different types of antibiotics which are available. In this very first slide, you can see from the beginning, from the left-hand top side, uh, these tubes that you see over here contains the antibiotic discs. हर ट्यूब जो है इसमें एक पर्टिकुलर डिस्क होती है. There are around 100 discs in each tubes, and these small filter paper discs contain a specific amount of antibiotic like penicillin, amoxicillin, ciprofloxacin, different antibiotics होती है. And the idea is to place them on a certain media full of bacteria जो आपने isolate किए. On the image on the right hand top side corner of the slide, you see there are different kinds of discs which are placed on a plate जिसके ऊपर ग्रोथ आई हुई है, पेशेंट के जो बैक्टीरिया हैं, जो इन्फेक्शन उसको हुई हुई है. एंड ऑल ऑफ दीज डिस्क हैव डिफरेंट जोन ऑफ इनहिबिशन. हर डिस्क के इर्द गिर्द आपको एक यू कैन बेसिकली सी अ क्लियर जोन जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हुई हुई है, और उस क्लियर जोन को जो है वो कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन. And some of them have bigger zone of inhibition and some of them has smaller zone of inhibition. On the bottom side, bottom right hand side, you have a special disc dispenser. एक मशीन होती है जिसमें आप 7-8 जो है वो डिस्क की जो ट्यूब्स हैं जो आपको मैंने ऊपर दिखाई थी वो आप इसमें खड़ी कर लेते हैं. You fix them in and then you punch it onto the slide, onto the Petri plate, and you can have all of the antibiotic discs which are dispensed at appropriate distance from each other. So in that way, this is a time-saving device. Plus, it has more accuracy. If you place them by hand using your own technique, you may have some inaccuracy or कुछ करीब लग जाएंगे, कुछ दूर लग जाएंगे. So this way, in the bigger labs, they save a lot of time by using this dispenser. In some scenarios, if you see the picture, जो multicolored disc आपको नजर आ रही हैं, these are specific discs which are available already mounted on a small cardboard scale, and you can just place the whole thing onto the specific media on the Petri plate, which has the growth on it, and it will start its functioning. And you can see that there are a zone of inhibitions for each one of them. Some of them has no zone of inhibition, some of them has more, and some are practically nil. How would you, let's start with the introduction. Antibiotics are basically the chemotherapeutic agents. These are purely chemical substances. Some are like penicillin is a natural antibiotic. Some are made by humans. So, but whatever their origin is, their use is to treat the infectious diseases, particularly the bacterial diseases. And the mode of action of both of them are, अगर आप लोगों ने pharmacology के courses पढ़े होंगे, you might have read in some pharmacology courses that antibiotic have two different types of actions. Some of them has an action of stopping the infection partially, कि वो bacteria जो है वो मरते नहीं है, but they stop their growth. और कुछ जो हैं वो bactericidal होते हैं, in which they can literally kill the bacteria completely. वो मर जाते हैं और the infection is cleared out. So different antibiotics have different mode of actions. The main aim for the antibiotic is that there should be no side effects on the host. आप antibiotic दें, और this is for an ideal antibiotic.
Any antibiotic, if it is used without the doctor's consent, or if it is used at a very high dose or prolonged use, it can has side effects on the kidneys, liver, and other body organs. And all of the chemotherapeutic agents or antibiotics have different site of action. कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, कोई फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है. So this is just for the initial sake of introduction. For medical microbiology course, you don't really require to know the mode of action, but you really need to know कि हर एंटीबायोटिक, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ एरियाज पे अफेक्ट करती हैं और उनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स नेचुरल होती हैं और कुछ जो है वो सिंथेटिक होती हैं. सिंथेटिक डेफिनेटली लैब में बनती हैं यूजिंग द बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर डिज़ाइन टूल्स. लेकिन initially they were discovered and they are still being made by some bacteria and some fungi which produce antibiotics for inhibiting or killing the bacteria. So सबसे पहले जो the scientists who discovered this particular method that we can in the lab we can screen the antibiotics was named as Kirby-Bauer. And he developed this filter paper technique for developing the antibiotic sensitivity test. So Kirby-Bauer ने clinical applications इसकी बनाई थी so that the laboratories can screen and best antibiotics for the treatment of bacterial infections. और ये आपको right side पे बैटरी प्लेट नज़र आ रही है. Kirby-Bauer स्टाइल में फिल्टर पेपर डिस्क के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक जब आप ऐड करके उसको incubate करेंगे, you have to incubate it for overnight at least 24 to 36 hours to see the effect. And you can see if you look closely to different disc, can you see the disc which is at the bottom right here? This is a particular disc जो कि आपको बता रहा है कि the bacterial infection has complete resistant to this disc, कि एक भी बैक्टीरिया जो है वो इनहिबिट नहीं हो रहा, जो भी इन्फेक्शन यहाँ पे चल रही है it is completely overwhelmed or this antibiotic has no effect on it. Beside जो बाकी सारे antibiotics हैं वो किसी हद तक different kind of efficacy के साथ उसको inhibit कर रहे हैं. So once you अगर आप hypothetically if you're working in a lab you will give the result. आप इन सारों की जो है वो zone of inhibition report करेंगे, ये भी report करेंगे कि किसको ये resistant है, किसको ये सबसे ज़्यादा sensitive है, and then you will have to measure. आपने जो zone of inhibition है उसका diameter measure करके तो आप उसको मिलीमीटर्स में रिपोर्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर जोन ऑफ इनहिबिशन है वो वाली एंटीबायोटिक जो डॉक्टर है या फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करता है ताकि पेशेंट को जल्दी रिकवरी हो. द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. इट्स अ स्टैंडर्ड डिफ्यूजन प्रोसीजर. आपने फिल्टर डिस्क के अंदर एंटीबायोटिक ऐड कर दी है और एंटीबायोटिक जो है वो डिफ्यूज़ करके इट विल गो इनटू द मीडिया और द एगर एंड देन इट विल इनहिबिट द बैक्टीरिया व्हिच आर ग्रोइंग ऑन इट. And it will determine the susceptibility of the isolated microorganism and it is rapid. Third point is it is rapid determination of drug efficacy. कि आपको एक दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर फौरन उसका आंसर मिल जाता है. It goes very quickly and the results are measured on the base of zone of inhibition. कि आप उसको डिस्क के इर्द गिर्द जितना एरिया वो क्लियर रखेगी बैक्टीरिया की ग्रोथ से उतनी उसकी एफिकेसी होगी. The basic procedure includes filter paper disc which are preferably uniform size, सारे एक size के होने चाहिए and you should have a very specific amount of calculated amount of antibiotic impregnated on it जिसके अंदर उन्होंने सोक करके उसको ड्राई करके उन्होंने प्रिपेयर किया होता है. साइंटिस्ट जो हैं जो रिसर्चर्स हैं वो खुद भी ये बना सकते हैं for their new compounds or for their new antibiotics जो वो डिस्कवर करें, लेकिन यूजुअली जो लैब्स होती हैं कमर्शलाइज होती हैं those labs have these particular disc available commercially. वो उनको बने बनाए मिलते हैं और उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. The procedure, if you go into a little bit more detail, I will show you some images too that will help you a lot to understand it. But let's read it through very quickly. The medium of choice is called as Mueller Hinton agar. And this particular agar is being utilized for antibiotic susceptibility assay because this
agar has the ability to uniformly diffuse the antibiotic in all directions. अगर आप कोई different type of agar use करेंगे, that agar may not have a very smooth diffusion of antibiotics in all 360 degree जिस साइड पे उसको मूव करे. Usually the plates are formed with the depth of 5 millimeter. इस पे बड़ी it's not a very thick plate, it's a 5 millimeter depth plate of the agar, and they are refrigerated. उनको आप फ्रिज में रख सकते हैं +4 पे. और इन बड़ी लैबों में ये बना के you can make the plates for a week even. आप उनको रख लेते हैं, and then whenever you want to use them, अगर आपके पास कोई सैंपल आता है तो आप उसको इंक्यूबेटर उधर से निकाल के, फ्रिज में से निकाल के इंक्यूबेटर में रख लेंगे फॉर 10 to 20 minutes टू ड्राई ऑफ द मॉइस्चर. जितने वो थोड़ा सा कंडेंसेशन आ जाती है फ्रिज में, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी. Afterwards, once you take it out, the plates are heavily inoculated with the inoculum using a swab to have confident growth. जो आपने पेशेंट का सैंपल लिया था स्वाब के ऊपर, उसको आपने एनरिच किया, ग्रो किया, and then once you have grown it, that culture will be the source जिसके ऊपर आपने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करनी है. तो उस कल्चर में से आप जो है वो अगेन स्वाब लेके आप अपनी जो प्लेट है मुलर हिंटन एगर की, उसको पूरी को आप स्वाब कर देंगे, उस पर फैला देंगे. And then afterwards, discs are aseptically applied to the surface of the agar at a well-spaced intervals. फिर आपने उसके बाद आपने जो है वो एंटीबायोटिक की डिस्क जो है वो उसके ऊपर रखनी है एक एक करके. अगर आपके पास डिस्पेंसर है तो इकट्ठे रख देंगे. अगर आप 1 by 1 रख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो आपने जो है वो बड़े ध्यान से एसेप्टिकली उसके ऊपर रखनी है. And after placing the disc onto the agar, you will have to make sure that you gently touch the disc and press it down to ensure its firm contact with the agar surface. अगर आप ये नहीं करेंगे तो what would be the error in the experiment or in the practical? That would be that there will be air in between the disc and the agar. There will be no contact. If there is no contact with the disc, there will be no diffusion. And if there is no diffusion, then there will be no inhibition on the agar plate. So in that scenario, never forget to press it down once you place it on the surface. But do not press it so much down that you break the agar or you bury the whole disc, but just to make sure that the contact is there. Here's the procedure. The diagram of the procedure is like that. So in case if you have a disc dispenser, you will place your antibiotic disc, जो आपकी tubes हैं, once you press it down, एक एक disc जो है वो नीचे से निकल जाएगी. ये आपके पास नीचे inoculated plate है agar की. You have a whole plate inoculated with the swab. आपने swab rub करके उस पे सारे पे अपना inoculum लगा दिया. The next step is you place the disc at equal space and then you press it down with the forceps. The point is that you will have to use a sterile forceps to press it down. ये वाला gently it is showing you a step of हर disc के ऊपर आपने रख के उसको थोड़ा सा दबाना है साथ. And once after 24 hours or 36 hours, you have the zone of inhibition आपकी बन जाएंगी. आप उसको इंक्यूबेटर में रखेंगे तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि there is a labeling for zone of inhibition. ये जो ऑरेंज कलर की डिस्क है, you have a clear zone around it that is called as zone of inhibition. जो ये darker area है जहाँ पे growth full growth आई हुई है, that is a confident bacterial growth. And then you have to measure using a ruler. एक specific millimeter वाला ruler होता है. You have to use it to measure the diameter. इसमें आप गौर से देखें तो डायमीटर जो है वो अक्रॉस द डिस्क फ्रॉम वन एज टू द अदर एज मेजर किया जा रहा है, सो दैट यू रिपोर्ट द इनहिबिशन इन मिलीमीटर्स इन डायमीटर, नॉट इन द रेडियस. तो ये प्रोसीजर था वो आपको क्विकली से दिखा दिया था मैंने. वी डिडंट डिस्कस इट इन वेरी माइन्यूट डिटेल, बट नाउ वी विल go through some more information जो कि required है आपको ये प्रैक्टिकल करने के लिए. तो उसके बाद आपने जो है वो प्लेट को गौर करना है और हर की जो है ना वो आपने जिस तरह पिछले में दिखाया था ना कि डिफरेंट जोन ऑफ इनहिबिशन है, तो आपने सबकी जो है वो जोन ऑफ इनहिबिशन मुहैया करके तो आपने रिपोर्ट करनी है. जो रेजिस्टेंट है वो भी रिपोर्ट करना है. इन सम के सिनेरियोज कुछ लैब्स में इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इन मिलीमीटर्स द जोन ऑफ इनहिबिशन, दे हैव डेवलप्ड a rule of
putting the +1, +2 up to +5 sign for the zone of inhibition. So anything which is having 4+ or 5+ zone of inhibition means that it is the maximum amount of, this is the antibiotic which gave the biggest, and then this one would be like 3+, and this will be 2+, 1+, and then this one would be marked as resistant. So जिस लैब में भी आप काम करने जाएंगे, if you are working in a certain lab and they ask you to perform एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, तो उनकी लैब का जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करेंगे, और जिस तरह वो रिपोर्ट करने के कहेंगे आप उस तरह उसको रिपोर्ट कर देंगे. जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस प्रोसीजर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या चीज़ अफेक्ट करती है. Number one is ability and the rate of diffusion of antibiotic into the medium or the agar, and its interaction with the organism. If your antibiotic is crystallized, if your antibiotic is having a property of not being diffusible or water soluble or having very poor solubility, तो वो आपकी एंटीबायोटिक जो है वो मीडियम में डिफ्यूज़ नहीं करेगी, एंड इट विल बी अनएबल टू इंटरैक्ट विद द ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट इट. तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो एंटीबायोटिक है उसको पॉसिबिलिटी हो डिफ्यूज़ करने की. द नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनोकुलेटेड. आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट जो है वो प्रॉपरली इनोकुलेट है, उसमें ज़्यादा सारे प्रॉपर कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ बैक्टीरिया की आएगी 24-36 आवर्स में, तो फिर आपको पता लगेगा. एंड देन द ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आपको पता हो कि जो बैक्टीरिया जो कि आपने इनोकुलेट किया है, whether that bacteria grows in 24 hours or not, whether it can make a confluent growth in 36 hours or 24 hours. So ये सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर गड़बड़ करेगा तो आपके जो रिजल्ट्स हैं आपकी टेक्निक के वो वैलिड नहीं रहेंगे. You will not be able to rely on those results. So the next point is that you have to measure the diameter of inhibition in millimeters. ये मैंने आपको बता दिया था. And the size is compared with the standardized chart. हर एंटीबायोटिक के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं. There are standards which are called as CLSI standards, जिस पर लिखा होता है कि अगर एम्पेसिलिन है और वो एक ख़ास 10 मिलीमीटर से कम जोन ऑफ इनहिबिशन कर रही है, विच मीन्स द बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट. अगर वो 10 मिलीमीटर से ऊपर जोन ऑफ इनहिबिशन है तो वो ससेप्टेबल है. एंड कंपेयरिंग द जोन ऑफ इनहिबिशन जो आपको मिला है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यू कैन टेल दैट द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक, इज इंटरमीडिएटली ससेप्टेबल और ससेप्टेबल. ये तीन कंडीशंस होंगी. या तो वो बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं होगा, वो फुल ग्रो कर रहा है बगैर किसी इनहिबिशन के, तो विच मीन्स के that bacterium is resistant to that particular antibiotic, for example penicillin. And then some of the antibiotics may have a very small zone of inhibition, जिसको आप कहेंगे कि ये intermediately susceptible है, and the ones which are having the maximum zone of inhibition, they are called as susceptible. There is another inhibition picture which I am showing you. You can see that this one arrow is showing the growth on the plate, the bluish color. Antimicrobial disk यहाँ पे लगी हुई है. The zone of inhibition is the zone in which there is no growth. तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर होगी है पिक्चर कैसी नज़र आएगी. And you can use a ruler with a handle और vernier caliper भी यूज़ कर सकते हैं. बाज़ लोग वो यूज़ करते हैं, but you can measure the diameters in that way. जो मैंने आपको CLSI के स्टैंडर्ड्स बताए थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जिनको आप यूज़ करते हैं. For example, the zone of inhibition for organisms के लिए table 44.2 में CLSI standard में there is a booklet that is published internationally. And for ampicillin, अगर आप example लें ampicillin की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अगर एक एंटीबायोटिक डिस्क एम्पिसिलिन की 10 माइक्रोग्राम एंटीबायोटिक है उसमें, एंड द जोन ऑफ इनहिबिशन इज लेस देन 13 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर से कम है, तो विच मीन्स दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपकी प्लेट में है वो रेजिस्टेंट है एम्पिसिलिन से. वो एम्पिसिलिन आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे उस पेशेंट को. और अगर जोन ऑफ इनहिबिशन 14 से 16 है सेम कंडीशन में, तो फिर वो इंटरमीडिएटली ससेप्टेबल है. फिर भी आप कोशिश करेंगे कि उस एंटीबायोटिक को रिकमेंड ना करें ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसके चांसेस ऑफ कंप्लीट रिकवरी नहीं है. एंड बट इफ द जोन ऑफ इनहिबिशन इज इक्वल और मोर देन 17 मिलीमीटर, अगर इतना वो जोन ऑफ इनहिबिशन है
तो फिर आप उसको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे बिकॉज द बैक्टीरिया इन द ऑन द कल्चर प्लेट आर ससेप्टेबल टू एम्पेसिलिन एट दैट पॉइंट। ये एक एग्जांपल होगी। इस तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट टाइप्स की पूरी लंबी चौड़ी किताब होती है जिसमें आप उसके रीडिंग्स पढ़ सकते हैं। सो एवरी लैब हैज़ सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। हर लैब के पास पूरी लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स की होती नहीं है, तो उन्होंने जो एक या 10-12 एंटीबायोटिक्स रखी होती हैं या मे बी 2 डजन एंटीबायोटिक लिस्ट रखी हुई हैं, तो उनका उन्होंने CLSI स्टैंडर्ड जो हैं वो फोटोकॉपी करके जो पेजेस हैं स्पेसिफिक वो साथ रखे होते हैं फॉर द रेफरेंस। क्या आप जो एंटीबायोटिक्स आपके पास लैब में हैं उनके पूरी किताब ना आपको पढ़नी पड़े, वो अलहदा निकाल के रखे होते हैं या पेज पे लिखे होते हैं। So you can quickly read measure the zone of inhibition and rate them as resistant, intermediate or susceptible. There is another method which is used, जो antibiotic disc वाला method है. This method is not quantitative. It is a rapid method for antibiotic susceptibility. There is another method which is called as broth dilution method. Antibiotic susceptibility के लिए broth dilution method आप use करते हैं, और इस मेथड के लिए आपको ट्यूब्स चाहिए होती हैं। यू रिक्वायर द ट्यूब्स टू रन दैट मेथड, और इन ट्यूब्स को जो है वो उसमें से आप उसकी CFU per ml काउंट करते हैं। दिस इज एन ओवरव्यू, एक इमेज जो कि आपको दिखा रहा है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ वुड यू परफॉर्म इट। लेट्स लुक एट द ब्रॉथ डिल्यूशन मेथड following this diagram over here. Your first step would be to number one is to obtain the colonies from the bacterial strain to test. जो आपने बैक्टीरिया ग्रो किया है या जो पेशेंट से निकला है उसको आपने कल्चर में लगा के ग्रो कर लिया है, and then you have the growth. The next step is to, after overnight incubation shown at the left, जिस तरह यहाँ पे आपको किया था, the broth with the appropriate dilution of antibiotic test tube are prepared with the concentration of the antibiotic. So इस सबसे पहले वाला जो ट्यूब है ये ग्रोथ कंट्रोल है जिसमें 0 एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट वन हैज़ 0.5 माइक्रोग्राम पर ml। उसके अगले वाले में उससे डबल है 1, 2, 4, 6, 4, 8, 16, 32. So they have a serial dilution or specific concentrations in the wells or in the tubes, and then you will inoculate these tubes with the growth, जो कि आपके पास ग्रोथ आई हुई है, जो यहाँ पे आई हुई है, वो आप उसमें डाल देंगे बैक्टीरिया, and you will add the bacteria at a density of 5 × 10⁵ CFU per ml की डेंसिटी पे आपने उसको ग्रो करना है। और आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन you will check the cultures for minimum inhibitory concentration, which is in fact the lowest concentration of antibiotic that visibly prevents the growth of bacteria. और इस पूरे सारी ट्यूब्स में जो आपने देखा है that is 64 मिलीग्राम per ml जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। This is the tube, the dilution of the tube, like 32 is not inhibiting. यहाँ पर जो है वो जो ग्रीन कलर का बैक्टीरिया वो ग्रो कर गया, but at 64 milligram the is the lowest concentration, जिसके बाद जो है वो सारे के सारे ट्यूब्स में there is an inhibition of growth. So this method is called as broth dilution method for antibiotic susceptibility. This is pretty much it for today. If you have any questions, you guys can ask me now, or feel free to drop me an email and I will be happy to respond to you. There is a YouTube link in which you will see a video of performing the antibiotic susceptibility using the DISC method. You can go have a look at that. It will allow you guys to develop some insight about it. Kindly mark your attendance in the chat box, and whoever marks the attendance can leave.